poppy cultivation in their respective areas. The Joint Tribes Council also pledged not to allow poppy cultivation in areas under their jurisdiction in Tamenglong and Nonne districts. Appreciating the move by the Joint Tribes Council, Chief Minister N. Biren Singh said that it is yet another great achievement in the war on drugs. Today is another great achievement of the state government and mainly the Joint Tribe Council consisting of Inpui, Lengmai, Siamai, and the Raumai from the Tamenglong and the Nonne district has come here and announced their full support on the ongoing war on drugs. And they have decided to support the movement of the government against the poppy plantation and against the drug business. And that they also assures publicly to the people of India, to the people of the state, that in their jurisdiction, mainly in Tamenglong and the Nonne district, they will never allow, and they never allowed in before also, and in future also, they will never allow this kind of poppy plantation and drug-related business in their areas. So I am really want to appreciate the leaders of the Joint Tribe Councils of these two districts and women's leaders who came and endorsed their support to the government of Manipur's movement against the war of the drugs. I'm really happy, and I really thanks to the people of the Joint Tribe Council's leaders. All right, we now cut across live to Itanagar, where activist Sol Dodum is addressing the media. Take a look. क्या इनिशिएट कर रोक रहा था एक्चुअली गवर्नमेंट जो अभी तक कुछ इनिशिएट नहीं लिया है और बहुत सा वायरल होता है, कभी क्या कागज देखने मिलता है, कभी कौन क्या बोलता है, कभी कौन क्या बोलता है। हकीकत में ये हम आप लोगों को ये मीडिया का तौर से क्लियर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको अभी तक कुछ कागज नहीं आया है। एक्चुअली यहाँ में प्रोटेस्ट रैली करने वाला तो हम था, लेकिन आज तक कभी मेरा यहाँ में एक भी कागज नहीं आया। हम क्लियरली बता रहे, गवर्नमेंट की तरफ से एक भी कागज नहीं आया। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आदमी को जाके पूछिए, होम से पूछिए, किसी भी पीएचई डिपार्टमेंट से भी और यहाँ से पूछिए, हमको एक भी जो कागज जो नहीं आया है। तो यहाँ बैठते बैठते भी आज कितना दिन हो गया, उस दिन जब 15 तारीख से लेकर आज ये हो गया, तो बहुत दिन हो गया। मेरा ख्याल से 25 डेज हो गया होगा। तो यहाँ तक बैठते बैठते बहुत थक गया है। तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ फैसला किया है कि हम लोग यहाँ से दिल्ली ही कल सुबह यहाँ से 8 बजे दिल्ली फुट मार्च करेगा। और कल भी एक कागज दिखाया कि ये क्या बोलता है, भारत सोनम का एक जो पीएचई एक्शन का मैंने कुछ ट्रांसफर लेटर खुद मांग रहा था। तो इसलिए हम ये बात बता रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं कर रहा है। और अभी तक डीसी बच्चा है, डीसी को ट्रांसफर करना चाहिए वो बच्चा है। उसके बाद अभी तक जो एम्बुश के मारा है एसआईटी जो गठन करना था, अभी तक कुछ नहीं बताया है। उसके बाद जो एसआईटी गठन करना था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। देखो मेरा हम पहले से ये स्टेटमेंट था, पैसा खाने वाला जो पैसा खाया है, जो WTP का जो पैसा खाया है, वो पैसा को रिकवर होना चाहिए। मेरा पहले से मांग यही था। और जो अभी बना रहा है वो सपा का ओनली 30% को है और 60% जो आप लोग मान लीजिए 60% का पैसा खा चुका है। हम हमेशा बार बार बोला है कि एसआईटी गठन करो, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट यहाँ गवर्नमेंट अभी तक कुछ कागज भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग मैंने तंग आ गया ये गवर्नमेंट से। तो इसलिए हम लोग निकालेगा, आप लोग को हम बार बार बताया है, हम यहाँ से निकालेगा तो दिल्ली पहुँचेगा तो हम जो नहीं बोलेगा वो तो गवर्नमेंट अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट साइड का कुछ काम नहीं करता है, जो करप्शन का साथ में कुछ नहीं करता है, तो गवर्नमेंट क्लास में बोलना पड़ेगा। तो हम ट्राई करेगा कि अगर आज और कल का बीच तक, कल का 8 बजे से पहले या आज रात तक अगर गवर्नमेंट मेरा जो हम लोग का मांगता है बोले तो हम लोग रुक जाएगा, नहीं तो कल 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। और हम अभी गवर्नर को भी सबमिट कर लिया है, गवर्नर को सबमिट कर लिया है ये कागज़, जो गवर्नर को सबमिट कर दिया कि यहाँ में हम लोग थोड़ा सेफ नहीं है। यहाँ में थोड़ा सा हम बता देगा जो गवर्नर को जो वहाँ में therefore it is the humble prayer to our leader lordship to do as demand of the demand fit for safety and security। माने हम लोग सिर्फ उसको डिमांड को ही ये सिक्योरिटी के लिए ही मांगा है। असम में
उसका बाद असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हम लोग बस उसके लिए मांगा है कॉपी टू किरण रिजिजू और कॉपी टू तापिर गाँव, कॉपी टू नाबिम रिबा। ये 3 को दिया है कि हम लोग यहाँ से जब निकलेगा तो हम लोग को यहाँ से हर स्टेट में थोड़ा ये सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करो बोल के हम लोग ये मांग किया है। और हम लोग कल यहाँ से 8 बजे निकल जाएगा। अगर गवर्नमेंट मानता है बोलने से ठीक है, अगर शाम तक कल 8 बजे तक मानता है ठीक है, नहीं तो हम लोग कल निकल जाएगा। और हम यहाँ से क्लियरली बोल, अगर हम असम तक पाँव रख लिया बोलने से, अरुणाचल गवर्नमेंट जितना बोल के भी वापस आओ बोलने से भी नहीं आएगा, दिल्ली तक पहुँच के दिखाएगा। मजाक सोच रहे हैं यहाँ में हम लोग का ना, सोच रहा होगा ये बच्चा लोग कुछ नहीं होगा, हम लोग को बराबर एसोसिएशन कुछ नहीं कर सका, ये लोग क्या करेगा ऐसे सोच रहा होगा। तो ये पता नहीं है कि हम भी जो करेगा सोचता है वो भी हम भी करके दिखाएगा। तो इसलिए मेरा ये सोच है कि अगर आज शाम और कल तक सुबह तक नहीं माने तो हम लोग दिल्ली 8 बजे निकल जाएंगे। हम लोग पूरा रेडी कर चुका है। थैंक यू। और कोई पूछ सकता है? जो सवाल पूछ रहे हैं, ये 11 तक पूछ रहे हैं। ये बहुत सारा का कहना है कि डिमांड्स तो जैसे कि भारत सोनम को ट्रांसफर हो गया है, तो वो लोग उनको नहीं मांग रहे हैं। भारत सोनम को ट्रांसफर, जो भारत सोनम ट्रांसफर जो वो खुद मांगा है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो खुद क्लियरली लिखा है कि वो खुद का मांगा है। गवर्नमेंट से क्या है, गवर्नमेंट इतने दिन से कुछ किया ही नहीं। भारत सोनम 10 तारीख को जैसे ही खुद का ट्रांसफर मांगा है तब तो गवर्नमेंट ट्रांसफर दे सके, एक यही। और उसका गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर ऑर्डर में देखो एक्शन लिखा है। तो इसलिए ये जो वो है जो गवर्नमेंट जो एक चीज भी नहीं किया है, भारत सोनम खुद वहां से ट्रांसफर मांगा है तब गवर्नमेंट किया, नहीं तो गवर्नमेंट तो कुछ किया ही नहीं। वही और बहुत सारा पब्लिक का ये भी कहना है कि आप जब पेपर से यहाँ पे आ रहे थे, साफ पानी के लिए आपका डिमांड था, लेकिन आते आते ईटानगर पहुँचते पहुँचते आपका डिमांड जो है चार्टर ऑफ डिमांड को बहुत सारा बढ़ गया है, तो वो भी सिर्फ मेरा साफ पानी देखिए, तब तो आप लोग का बोलने का मतलब जो वहां से आते आते हम पाकिस्तान तक पहुंचे समय में भी आपका चैनल में भी हम यही बात बोला था कि अगर पाकिस्तान तक हम पहुंच गए, हम ये पपम पर जहाँ जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक अगर साफ पानी देते हैं हम वापस आ जाएगा बोला, तब तक नहीं माना है। हम बोला यहाँ तक पहुंचेगा चार डिमांड भी बहुत बढ़ेगा बोला है, बढ़ाया है। हम अपना बात पर रखा है। तो मेरा भाई लोग को जो एम्बू से मारने वाला वो लोग को क्या हम छोड़ देगा आसान से? कहाँ से आसान से छोड़ेगा? क्योंकि उसको आसान से छोड़ेगा तो यहाँ में तो गुंडागिरी मारपीट तो ज्यादा हो जाएगा और भी। तो इसलिए ये तो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम अभी दिल्ली जाएगा तो दिल्ली में भी छात्र बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? या वहां पहुंचने का बाद और भी बढ़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। उसको तो नहीं बता सकेगा क्योंकि हम वहां से भी कुछ भी नहीं बताया, तो अभी उसको भी नहीं बताएगा। यहाँ वहां पहुंचने का बाद मालूम होगा कि क्या है बोलते। वही जैसे हम लोगों ने एसपी से भी पूछा था, ये जो आप लोगों को जो आप लोगों के ऊपर जो अटैक हुआ था, तो एसपी बोला था कि अभी इंक्वायरी चल रहा है। तो हमारा एसपी का इंक्वायरी जो चलते रहता है एसपी का, और उतना मीडिया में देखा था, वो बोले थे मंकी के वाला को अरेस्ट कर लिया। तो भारत सोनम से अरेस्ट हो गया होगा। तो अरेस्ट करने वाला आदमी जो, अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला अगर कोई अरेस्ट होता है तो नियम से उसको सस्पेंड होना चाहिए या उसको इंक्वायरी में रखना चाहिए। और जो हमको एम्बुस के मारा वो पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आदमी, पीएचई के आदमी लोग ही, लेबर लोग ही है, तो वो लोग को रखना चाहिए था। और हम यही मांगता कि उस दिन में जब हमको एम्बुस के मारते समय में हम ये क्लियर आरोप लगा रहे हैं, भारत सोनम एसपीडीसी सबको फोन किया है। उसका सामने में 360 न्यूज का ये सीईओ ये तूतू दोनों को भी वो फोन किया, वो एक्सेप्ट करा के फोन किया है। हम तो वहां में मेरा ये क्या बोलता है वो एसआईटी ये क्या बोलता है, कमेटी को पूरा दिया है, जो पूरा को दिया है, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक्शन नहीं ले रहा तो मेरा भी उपाय नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इतना कमजोर है। हम जो पूरा लिख के दिया है कि उस समय में इतना इतना में करना हुआ, ये हुआ, पूरा दिया है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। वही आपका बोलने का मतलब है कि आप अरुणाचल गवर्नमेंट से आप अभी कुछ भी आपको फेस या ट्रस्ट नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते आप। देखिए, त्रास करता है तो हम अभी भी तो भरोसा करता है, क्यों भरोसा नहीं करेगा? हम अभी भी भरोसा करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कर रहा नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है। देखो, भरोसा तो क्यों नहीं करेगा? हम थोड़ी वो मेरा थोड़ी मांग है कि एमएलए गिराओ, मिनिस्टर को गिराओ, चीफ मिनिस्टर गिराओ, ऐसा नहीं है मेरा कोई मांग, कोई एमएलए मिनिस्टर मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम जो चला रहा है, जो कर रहा है, वो बहुत गरीब आदमी के लिए हानिकारक है। अभी समय में आप सोचिए, पानी के लिए मांगा, एम्बुस से क्या मारा है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो किसका ऊपर में लगाया है? मेरा ऊपर में उल्टा 144 कर्फ्यू लगाया है। डीसी तो उसका ऊपर में लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा ऊपर में 144 कर्फ्यू लगाया था। इसलिए मेरा ये देखो, अरुणाचल गवर्नमेंट से भरोसा, अभी भी भरोसा करता है, कल को भी भरोसा करेगा।
हम अरुणाचल गवर्नमेंट को भरोसा नहीं करके किसको करेगा, लेकिन कोई कोई व्यक्ति को भरोसा नहीं करता। वही जैसे आप दिल्ली मार्च करोगे तो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या होगा? आपको आपको डर नहीं है क्या कि रास्ता में कुछ हो जाए या ऐसा कुछ? आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी और आप उसको ले जाएंगे आपके साथ? देखिए, हम बार बार बोला है, जो हम ले जाएगा वो भी अपना रिस्क में जा रहा है, मेरा कोई रिस्क नहीं है। क्लियर, हर कोई अपना रिस्क में जाएगा। वहाँ से आया भी तो अपना रिस्क में आया है, यहाँ से जाएगा भी अपना रिस्क में। और दर्द तो कौन नहीं लगेगा, हम इंसान है, आदमी जो जानवर भी डर के आदमी मारने के लेकिन डर के भागता है, हम भी तो डरता है, लेकिन सच्चाई को लड़ना जरूरी है। हम ऐसे भी देखें कि अरुणाचल में जब तक कोई किसी का मौत नहीं हो जाता है, किसी का नहीं मरता है, तब तक अरुणाचल गवर्नमेंट जो एक्शन नहीं लेता है। अरुणाचल गवर्नमेंट वही सोच रहा होगा, एक आदमी मरने दो तब हम एक्शन लेगा, सोच रहा होगा। तो हम लोग एक तो मरेगा होगा तब तो बात को रास्ता में जाके, तो रास्ता में जाके एक तो मरेगा तब एक्शन लेगा होगा अरुणाचल गवर्नमेंट जो। मेरा यही सोच है कि ऐसा नहीं हो कि अरुणाचल गवर्नमेंट आराम से एक्शन ले सकता है, उसको नहीं लेके हम लोग कल निकल जाएगा। वही है। आपके साथ टोटल यहाँ से कितना लोग जाएगा दिल्ली तक? टोटल कितना जाएगा उसको तो हम नहीं बोल सकते, अभी हो जाएगा बोला है, और आधा लाख तो नहीं है अभी, पता नहीं कितना जाएगा, उसको तो एग्जैक्ट पता नहीं। क्या आज शाम तक अगर कुछ आप जिसकी आप बोल रहे थे, जब तक पर्सन टू पर्सन आपको जो ऑर्डर जो है जो सर्कुलेट हो रहा है वो आपको पर्सन टू पर्सन जब तक नहीं देगा आप तब तक फॉलोअप नहीं करेगा। अगर वो किया जाएगा तो आप फॉलोअप कर देंगे? अरे वो देगा तो मेरा भी तो देखो, हम क्लियर बता, अगर गवर्नमेंट ऐसा एक्शन लेगा तो हम चार्टर ऑफ डिमांड को पूरा करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ बैठेगा। मेरा भी घर है, जब तकलीफ हो रहा है वहाँ जाना है, यहाँ में इतना तकलीफ सो के बैठा है, हम निकल जाएगा, यहाँ कोई मेरा बैठने का इरादा भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर नहीं देगा तो हम लोग दिल्ली निकालेगा, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है ना वो बहुत गलत है। मेरा सिर्फ नहीं, आप लोग के लिए भी फ्यूचर, आप लोग के लिए भी फ्यूचर है, आप लोग के लिए बात को प्रॉब्लम होगा। वही दिल्ली में कितना दिन का रहने का प्लानिंग कर रहा है? उसको रहने के लिए तो नहीं बोला, वहाँ में पैसा नहीं, खाना का नहीं है, वहाँ में तो अरुणाचल जैसे तो कोई खाना पीने का तो देगा नहीं है, तो उसको रहने के लिए फिक्स नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचा के अपना आवाज उठा के देखेगा, उसको देख लेगा वहाँ में क्या करना है। आप लोग यहाँ से दिल्ली से आप लोग कहाँ पे वहाँ पे कल्मिनेट होगा आपका जो ये फुट मार्च जो आपने कहाँ रुकोगे? दिल्ली कहाँ रुकेगा उसको तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि अभी वहाँ में जो बच्चा स्टूडेंट लोग बोल रहा है कि वहाँ पहुंचो, उसका बाद वो लोग वहाँ एग्रेस करेगा वगैरह बोला, इसलिए उसका वो में हम जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ का जितना दिल्ली में पढ़ रहा है और जहाँ भी बिहार यूपी में जितना सामने हमने पढ़ा है, वो लोग पूरा बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, आ जाओ। तो अभी रहने के लिए तो पता तो है नहीं, हम तो दिल्ली में तो रियल बता रहे हैं, एक दो बार गया लेकिन गाड़ी में गया, पैदल तो कभी गया नहीं। तो इसलिए देखिएगा कि वहाँ में क्या करना, प्लानिंग करना है, लेकिन हम ट्राई करेगा मेरा आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे, यहाँ में क्या चल रहा है पहुंचना चाहिए। जो पब्लिक जो सेपा का पब्लिक और अरुणाचल का पब्लिक, पूरा नॉर्थ ईस्ट का पब्लिक आपको देख रहा है, जो आपका वीडियो को और आपको शुरू से जो देखते आ रहा है, और वो लोग से आप क्या बोलना चाहिए? वो लोग को मेरा यही है कि देखो, हार तो नहीं मानेगा, हम वो दिन से बोला हार तो बिल्कुल नहीं मानेगा और झुकेगा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पुष्पा फिल्म वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने झुकना मैंने ऐसा है कि मैंने हार क्यों मानेगा, हम सच्चाई को बात करें तो क्यों हार मानेगा, और हम बिल्कुल मरने से भी हम हार नहीं मानेगा। इसलिए तो सब लोग बोलते हैं कि वहाँ जाने से मरेगा मरेगा, वही तो जा रहा है, मरना है ना एक आदमी, तब तो आदमी जो भरोसा, क्योंकि अरुणाचल गवर्नमेंट जो जब तक आदमी नहीं मरे तब तक भरोसा नहीं होता है, जब आदमी मरता है तब अरुणाचल गवर्नमेंट जो बोलता है हाँ ये आदमी सही है, सही काम कर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग भी देखेगा, अगर भगवान का कृपया से अगर बचता है बोले तो हम लोग ठीक है वापस आएगा, नहीं बचता है बोले तो चलते रहेगा। वही तो अरुणाचल का पब्लिक को यही हम बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट का जो बदू बनाते हैं, हम लोग को बदू बनाते हैं, हम लोग को ये करता है, विश्वास नहीं करना है। जो सच्चाई में, अगर सच्चाई में वो लोग कर देते बोले मेरा हाथ में कागज रख देना था, ये क्या ये कर चुका है, ये आपका डिमांड फुलफिल है बोल के कागज लिख के रख देना था। तो अभी तक कुछ लिखा नहीं है, तो इससे गवर्नमेंट हम क्या भरोसा करेगा। जितना भी पब्लिक है जो सोशल मीडिया में जहाँ तहाँ वायरल होता है, जो उसको भरोसा नहीं करना है। जो हम यहाँ पे क्या सच में जानता है कि कितना करप्शन है, कितना प्रॉब्लम है। वही ओके, तो सर आपका जो 7 पॉइंट आपका जो चैप्टर ऑफ डिमांड था, तो उनमें से कितना आपको लगता है कि सक्सेसफुल हुआ? देखिए मेरा चार्टर ऑफ डिमांड जो एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों, अब हम बताएगा। हम जो बार बार बोला है कि हम लोग को WT को जो शुद्ध पानी जो सपा में मिलना चाहिए वो तो मिल रहा नहीं है। वो तो अभी देखा है तो कोची का वहीं से तप के पिलाएगा, वो तो शुद्ध पानी नहीं है ना, वो तो नेचुरल वाटर है ना, वो नेचुरल वाटर को पिला रहा है, वो तो शुद्ध पानी। और जो WTP थे वो जो क्या है कि तपान का सिर्फ 30 या 40% वो कवर होता है और 60% बचता है। तो 60% को जो मच्छा नदी है वो कवर करना चाहिए, उसका पैसा तो पूरा कहा दिया। तो हम बोला उसको ऐसे ही गठन करो, बोला उसको भी नहीं मानता है, जहाँ तहाँ बात को अंदर को मिलाने के लिए कर रहा। उसका बाद जो अभी लाई मोयातू मॉडल विलेज, हम उसको बार बार बोला, उसको भी ऐसे ही लगाओ, अगर लगा के अगर वो तो प्रॉब्लम होता है बोलते, हम तो ये बोल रहा है कि तब ना जो पैसा का है उसको वापस लेके हम लोग का जो काम दूसरा काम में यूज करेगा। नहीं तो देखो वहां में झूठ मूठ का काम कर रहा है, झूठ मूठ का वो कर रहा है, ये तो बात बनता भी नहीं है।
तो सर आपका यही कहना है कि आपका जो हम मांग है ये मतलब जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है मतलब ये मतलब आपका मांग को जो फुलफिल नहीं करे, इनकेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर आपका मांग को अगर फुलफिल नहीं करता है तो फर्दर स्टेप क्या रहेगा सर? देखिए अगर हम यहाँ से जाएगा, हम ये बिल्कुल भरोसा नहीं करके जा रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा बात को मानेगा, नहीं मानेगा, हम पता है, और हम भरोसा भी नहीं कर, मैंने ये सोच के नहीं जा रहे। लेकिन अरुणाचल में जो करप्शन हो रहा है उसको इंटर इंडिया जानना चाहिए, हर भारतवासी जानना चाहिए कि अरुणाचल एक छोटा सा राज्य है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन जगह के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। इतना करप्शन हो रहा है, करोड़ करोड़ में घोटाला हो रहा है, हजार हजार करोड़ में घोटाला हो रहा है बोल के सब जानना चाहिए, कि सब इससे जानना चाहिए कि एक लड़का यहाँ से करप्शन के लिए निकाला है, दिल्ली तक पैदल मार्च किया है, यहाँ से उसका ग्रुप जा गया है, और अरुणाचल में इतना करप्शन है, सबको जानना चाहिए भाई। तो अरुणाचल करप्शन को बताने जा रहा है, हम वो प्रधानमंत्री को मिलेगा वो नहीं, हम सब दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि रियल में स्टेट में हम लोग अरुणाचल में करप्शन चल रहा है वही। सर जी आपसे एक सवाल है, कल अफसू का 3-4 न्यूज बनाया था अरुणाचल आई में, तो वहाँ पर पब्लिक लोग ऐसे कमेंट कर रहा था कि 100-2 को बोनाफाइड स्टूडेंट बना देगा। हम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो जो कमेंट कर रहा है, हम क्लियरली बोला हम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हम बहुत कम मैंने एजुकेशन वाला है, तो इसलिए कोई तो बोलता है आप लोग का वो न्यूज वाला में इंग्लिश बोलने समझ में नहीं आता, वो हम क्या आपको झूठ बोलेगा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होने से भी। लेकिन मैम ये सब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रियल बात बोल रहा है, ऐसे तो खराब बने जो आप सुप प्रेसिडेंट से किसी कांडिडेट करने वाला वो लोग तो असली में 50, 60, 70 ईयर्स का बुढ़ा लो है, वो लोग असली में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पढ़ रहा है, बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हमको ये अफसोस में इंटरेस्ट नहीं, ये सब में इंटरेस्ट नहीं। और हम ऐसा सोचा होगा आपको आपके प्रेसिडेंट के लिए, पता नहीं, उसको तो हम मालूम नहीं, पब्लिक का सोच को हम नहीं बोल सकते कि कैसा, लेकिन मेरा हम क्लियरली बोलते हैं, हम बहुत क्लियर से बोलते हैं कि हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि हम आपसू आंसू करेगा, कोई एमएलए करेगा, क्योंकि एमएलए में भी बराबर एसपी देना पड़ता है, तो ये क्या बोल आपसू आंसू में बराबर एसपी देना पड़ता है, उसमें हम नहीं होता है। जो हम सीधा सीधे जो पब्लिक के लिए, हम लोग गरीब आदमी के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए लड़ेगा, रास्ता चाहिए रास्ता, हेल्थ के लिए लड़ेगा, एजुकेशन जो बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए लड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक के लिए लड़ेगा, उसके बाद पीडीएस के लिए लड़ेगा। ये जो फैसिलिटीज लोग जो है ना, बेसिक एम्यूनिटीज लोग जो है पब्लिक लोग के आप सुविधा कर देगा, वो चीज को आप पॉलिटिक्स में आके भी तो कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में आके भी तो कर सकते हैं। जब हम पॉलिटिक्स आएगा उस समय में क्या होता है, पॉलिटिक्स होने से क्या होता है, मेरा ऊपर वाला में कोई पार्टी होता है, वहाँ हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो हम ऑर्डर देने से हम भी नहीं कर सकेगा, उससे अच्छा तो पब्लिक देख के, पब्लिक में बैठ के आप लोग का साथ लेके, जो आप लोग अभी मीडिया लोग साथ देता है ना, जितना मीडिया आप लोग साथ दे रहा है, उसका जो पब्लिक लोग साथ दे रहा है, उसमें करके अगर हम लोग सरकार को समझाने, वो सबसे अच्छा है, वो आदमी के लिए बेनिफिट है। अपना कुछ सरकार में होगा तो बोलने नहीं सकेगा, ये तो क्लियर बता रहा है। हम खुद पॉलिटिक्स होगा तो हम कहाँ से बोल सकेगा, हमको भी तो पैसा खाना है ना, हमको भी घूमना है फिरना है, दिल्ली में जाके एंजॉय करना है, वहाँ में रेल लेके, ऐसे तो दिमाग लगाएगा ना, वो तो क्लियर बता रहा है, दिल्ली में जाके रेल लेके बैठना है, वहाँ में घूमना है, फ्लाइट में घूमना, ऐसे दिमाग तो पब्लिक काम नहीं कर सकेगा। अगर पब्लिक काम सीरियसली करना है बोले, हम लोग का जैसे आम जनता बैठ के ये खराब है, हम भी तकलीफ होना है, तब जान के ये करना है वो करना है, नहीं तो नेता जब बनता है ना, आदमी जो बहुत सा बोलता है कि नेता बन, हाँ अगर ओपोजिशन नेता होके रखता है बोलने से, वो आदमी कुछ पब्लिक के लिए हला कर सकता है, लेकिन गुडलिंग तो कभी नहीं सके, वही है। तो सर आपने जब से सेपा से लेके यहाँ तक आपने जब से वो किया फुट मार्च किया, हमारे इंटर अरुणाचल प्रदेश के जितना भी जो लोग हैं आपको काफी प्यार दिया है, तो आप जो कल के दिन में आप अरुणाचल को छोड़ के जाने वाले हैं, तो सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरुणाचल कल छोड़ के तो वापस तो आएगा ना वापस तो आएगा ना, छोड़ के तो कैसे जाएगा, वापस तो आएगा, ऐसे तो मत बोले, ऐसे लग रहा है कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। प्यार है अपना, जितना पब्लिक से प्यार, जो उम्मीद करता है ऐसा ही आगे प्यार करते रहे, और जो सचमुच पब्लिक के लिए काम करेगा उसको हमेशा प्यार करते रहे, और जैसे हमको प्यार किया है हमेशा एकजुट होना है। गरीब आदमी लोग जो हम लोग को जो नीडफुल चेत होता है, गरीब आदमी हमेशा एकजुट होते, ऐसे होते रहना है, क्योंकि कल को फ्यूचर में मेरा साथ भी हो सकता है, आपका साथ भी हो सकता है। जो हम लोग का मांग है, जो सही में मांग करता है, उसको हमेशा पब्लिक साथ देना, और हम क्लियरली बोल रहे हैं, इसलिए पब्लिक जो हम दिल से, और पब्लिक और मीडिया लोग को शायद कल का बाद आप लोग शायद हमको नहीं भी मिलेगा, हम फ्यूचर में मिल सकता है, लेकिन कल का बाद माने हम निकल जाएगा, तो हम मीडिया और पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा हम लोग एक ऐसा ही एक साथ काम करते रहना है, ऐसा एक यूनिटी होते रहना है, तब सरकार सुधरेगा, नहीं तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेगा, चुपचाप करते रहेगा, कभी सरकार नहीं सुधरेगा, यही है। तो सर काफी लोगों का सर ये भी कहना है कि आप यहाँ से मतलब दिल्ली जाके मतलब कुछ आउटकम नहीं आने वाला है, उससे अच्छा आप यहाँ में ही धरना करने से काफी यहाँ के जो लोग हैं, जो आम नागरिक जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके आप सपोर्ट कर सकते हैं।
ये भी अगर कहना है। अगर हम यहाँ से निकालेगा तो हम लोग अरुणाचल करप्शन को हम हर स्टेट में बता के निकालेंगे, और तो कंफर्म बता रहे हैं हम। जो Lastly, आप पेमा खांडू लेट कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने उसका रिप्लाई दिया। अगर हम यहाँ से अगर वो होता है बोलने से, यहाँ से निकलता है बोलने से कंफर्म अरुणाचल का जो करप्शन है उसको निकल बता के जाएगा, ठीक है। तो करप्शन बता के जाएगा तो अरुणाचल गवर्नमेंट अपना शर्म लगेगा होगा कि हम लोग बड़ा बड़ा वहाँ स्टेट में बात करते हैं, दूसरा स्टेट में बड़ा बड़ा बात करता है, बड़ा बड़ा करता है, लेकिन अपना खुद के स्टेट में ठीक नहीं करते हैं। तो सब जानना है, तब तो सब ठीक होगा कि ऑफिसर लोग कैसे है, क्या है, उसके बाद यहाँ में पॉलिटिक्स कितना करप्शन है, तो सब जानना है, सब स्टेट जानना है। हाँ, तब तो मालूम हो जाएगा कि अरुणाचल कितना करप्शन है। अभी तो अरुणाचल को तो अभी आप लोग का मीडिया, नेशनल मीडिया को यहाँ आना भी बैन है कि हम ऐसे दावा दे, तो नेशनल मीडिया तक पहुंचना चाहिए कि अरुणाचल कितना खराब है। एक आम जनता बता रहा है तो सचमुच खराब होता है, छानबीन कर लो, वही है। और हम कभी उम्मीद नहीं करते कि वहां से हम एक फुल माला लेके आएगा, वहां से हम पूरा सक्सेस होके लेके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ भी सक्सेस नहीं है, वहां भी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये सोच है कि सारा इंडिया, सारा भारत ये जानना चाहिए कि हमारे स्टेट में कितना करप्शन है, वही है। अभी वही हम पेमा खांडू साहब से यही मांग करता है कि आप चार्टर ऑफ डिमांड को आज शाम तक 8 बजे तक यहाँ में पहुँचा दीजिए। हम नहीं तो नहीं जाएगा, या तो अभी भी रेडी है तो पहुँचा दीजिए। अभी तो हमको एक भी नहीं है, अगर रेडी नहीं है तो हम लोग निकालेगा। उम्मीद करता है कि आप ही सीएम बनते रहे, अच्छा से बनते रहे, क्योंकि हमको सीएम चेंज करना नहीं है, हमको क्लियर, हमको कोई सीएम चेंज नहीं, लेकिन सिस्टम चेंज करना है। जो सिस्टम करप्शन चल रहा है उसको चेंज करना है, कोई सीएम चेंज करना हमको, मेरा वो नहीं है, क्लियर। तो आपको ये कहना है कि जो अभी ऑर्डर जो मीडिया में घूम रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है आपके हिसाब नहीं, हमको नहीं पहुंचा, ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं से? है। जब तक आपके पास नहीं पहुंच जाएगा वो तब तक ऑथेंटिक नहीं है। वो तो ये ना होता है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, डिमांड हम कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड करते, मेरा साथ पहुंच के हम तब पब्लिक को बताएगा ना, हाँ मेरा साथ पहुंच गया है, अभी आप लोग विश्वास करो, वही वही करे। थैंक यू। So that was activist Sol Dodun's press conference. We'll slip into a very short break here, viewers. Don't go anywhere. Lots more coming up on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. হিমালয় পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ এও এক্সপাৰ্ট কেনেকৈ এটো ক্লিনিক্যালি প্রুভেন হয় যে ইয়াৰ আছে নিম আৰু হালধিৰ এন্টিব্যাকটেৰিয়েল গুণ যি পিম্পল আঁতৰ কৰে আৰু স্কিন কৰি তোলে একেবাৰে হেলদি। ৱাহ হিমালয় পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ, পিম্পল ফ্ৰী হেলদি স্কিনৰ এক্সপাৰ্ট। বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? দিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আসল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম সাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. ও বাহ, বাহ, অভূতপূৰ্ব ভেৰাইটি, অপূৰ্ব মূল্য, ডাউনলোড মিছো। বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? দিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো।
ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি অনুপম পিকচাৰ অনুপম চাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো একোলাই Absent. পারফেক্ট অ্যাটেন্ডেন্স নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ Oh, bah. অভূতপূৰ্ব ভেৰাইটি অপূৰ্ব মূল্য ডাউনলোড মিছো বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা হুম, ডিছ এইচডি নাই লগোৱা হুম। কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি অনুপম পিকচাৰ অনুপম চাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো Welcome back, viewers. You're watching the news at 5. Before we continue, let's have another look at the headlines. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma directs Home and Social Welfare Departments to come up with detailed plan to fight drug menace in localities of Shillong. Focus also on awareness and rehabilitation. Another boost to Manipur's war on drugs. A joint tribes council comprising of 4 communities takes pledge to ban poppy cultivation in their area. Chief Minister N. Biren Singh lauds move. Meghalaya exempted from purview of Common University entrance test. Union Minister Dharmendra Pradhan confirms development to Chief Minister Conrad Sangma. And Naga People's Front holds emergency central executive meeting. Party now disease-free, says President Shurhozeli Lizetsu. Party adopts 6-point resolution. Welcome back, viewers, and on to another top story now. In a big decision, the center has decided to exempt Meghalaya as far as the Common University Entrance Test or QET is concerned. In a letter to Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma by Union Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan, it has been informed that taking into consideration the concerns raised by the state like geographical conditions, hilly terrain, far-flung location, limited digital connectivity, infrastructure amongst others, the affiliated colleges of NEHU will continue with the existing practice for admission instead of the CUET. It may be mentioned that Chief Minister Conrad Sangma had recently called on Pradhan in New Delhi to apprise him of the concerns of the students of the Hill State. Meanwhile, Chief Minister Conrad Sangma also confirmed that he had received the letter from Union Minister Dharmendra Pradhan on the centre's decision to exempt students under NEHU from the CUET. While we were in the meeting, the letter from Dharmendra Pradhan ji also came in, so it was a good timing for us in one way, and where Dharmendra Pradhan ji has specifically mentioned that the other colleges can continue their admissions on the basis of how they used to do before, which means that CUT will not have to be taken. And staying with Meghalaya now, representatives of the Federation of All School Teachers of Meghalaya, or FASTOM, today met Chief Minister Conrad Sangma and pressed for their demands to be fulfilled. During the meeting, Chief Minister Conrad Sangma took cognizance of the demands that have been put forward by the ad hoc teachers. Chief Minister Conrad Sangma also assured the FASTOM representatives that the government is working on a solution and a decision will be taken within 3 sittings of the state cabinet. So viewers, indeed another big development coming in from Meghalaya. Representatives of the Federation of All School Teachers of Meghalaya, or FASTOM, today met Chief Minister Conrad Sangma and pressed for their demands to be fulfilled. During the meeting, Chief Minister Conrad Sangma took cognizance of the demands put forward by the ad hoc teachers.
Chief Minister Sangma further assured the FASTOM representatives that the government is working on a solution and the decision will be taken within 3 sittings of the Meghalaya cabinet. Based on the meeting that we had today, we had 3 meetings actually today. 2 meetings with Sir D.P. Walang and 1 meeting with the Chief Minister. So in the first round of meeting that we had with Sir D.P. Walang, we had a discussion on the proposal that was made, and then he had briefed to us about the different things that were being taken up by the education department, and he has also assured us that our file is in the last stage, exactly as what the Deputy Chief Minister, Sun Song, has said yesterday at the media. So based on the second meeting, we came back. So we told Sadiq Walang that we actually need to meet with the CM now to get the affirmation and the commitment from their side. So when we met the Chief Minister, he gave us the commitment that that the status of the enhancement and the increment, which is, and the new proposal that is being sent, actually the upgraded proposal, which is actually a better proposal that is being sent by the education department to the Chief Minister, he will need 3 cabinet meetings. So he said that maybe it can be done in the first cabinet meeting, maybe it can be done in the second cabinet meeting. However, he gave us the assurance of the 3 cabinet meetings because he said just in case. So we took his word that we will wait for the 3 cabinet meetings. Meanwhile, we have first reactions coming in from Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma, who said that the file to grant enhancement to the ad hoc teachers is under process and will be approved by the cabinet once everything is sorted. Sangma said that the enhancement will impact to the tune of over rupees 100 crore to the state government. Chief Minister Sangma said that there are 2 ways of dealing with this impact, one of which includes deduction of funds from other departments and diverging it for enhancement of the salaries of the ad hoc teachers. According to Chief Minister Sangma, the second way is to generate more revenue. Meeting with the members of FASTOM. Yeah, so the education department had met them, and they had expressed concerns about their enhancement of their the grants that are being given to them. So therefore, that entire file is being processed, and once it reaches my table, it will be put up in the cabinet for discussion. Because as I mentioned to you, the impact is in hundreds of crores. And so once that happens, it's an annual affair. And if you were to go ahead with that kind of decision, then there are only 2 ways ahead for us. One is to cut the budget from other departments and so divert the funds from somewhere else and put it into this, because there's only one pool. Or the second issue is how to raise more revenue. So therefore, all those things will have to be discussed in detail in the cabinet, and therefore the cabinet will take a call. So we'll put it up in the cabinet and we'll see how to go. Well, this indeed can be seen as a big development, as it was only yesterday when FASTOM had decided to go ahead with its indefinite rally from today. It may be mentioned that FASTOM had announced for an indefinite strike following the Meghalaya government expressing its inability to give in to the demand by the teachers' body for an enhancement of rupees 18,000 and an increment of 5% annually. All right, on to the big story from Tripura now. Raising their voice against rising fuel prices, taxes and insurance premiums, the C2-affiliated transport workers in Tripura took to the streets of Agartala today demanding immediate rollback of fuel prices, amongst others. The protesters, consisting of members from various transport organizations, including four-wheelers, auto rickshaws, e-rickshaws and rickshaw pullers, hit the streets of the capital city today, holding up posters, red flags and placards, and raising slogans against the government in the state and at the center.
The protest started from Paradise Chonbuni area and culminated in front of the transport office in Agartala. The protesters allege that due to rise in fuel prices and its cascading effect, it has become nearly impossible for them to make a profit or hold a steady income. The protest was led by former Minister Manik Dey, who is also the state president of Situ. Addressing the gathering, Manik Dey accused the state government of deliberately trying to destroy the state's transport sector. Meanwhile, former MP and Situ State Secretary Shankar Prasad Datta, while speaking to Northeast Live, informed that the delegation shall later also meet the Transport Secretary and formally place their demand for rollback of prices of fuel, spare parts, lubricants, taxes and insurance premiums so that the workers engaged in the transport sector can continue with their work. The transport workers of Tripura, under the banner of CI2, assembled here to meet with a deputation with the Secretary of State Transport Department to place 13-point charter of demands. The main demands are curb the hike of petroleum prices, curb the hike of materials which related with the transport, and the repression which is being done by the Transport Department of Tripura, by the police, with the transport workers, that should be stopped immediately. All right, it's time for another short break now. Lots more to follow on at the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. What's trending? Who are the biggest newsmakers of the day? What are the issues affecting people? Center hand once again extended. Are you ready to agitate? नोटिस लाइव सभी को मेरा शुक्रिया. Watch Evening Prime every day at 7 p.m. only on Northeast Live. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Welcome back, viewers, and on to another big story from Assam. The Kachar District Administration has launched a massive clearance drive in the Dolu tea estate, deploying as many as 200 excavators. The clearance drive is being carried out by a team led by Special DGP Law and Order G.P. Singh. As per inputs, the clearance drive has been launched after tea garden laborers planted saplings in 2,500 bighas of land, protesting against the construction of the much-anticipated Greenfield Airport. It may be mentioned here that the tea garden laborers have taken strong exception to setting up of the Greenfield Airport, despite the signing of the Memorandum of Understanding between the tea garden management, garden unions and district administration back in March this year. The MOU stated that cultivation of tea leaves could be done in the other part of the land and not in the portion that has been allocated for the airport. However, as per reports, 30 lakh saplings have already been cleared by the administration as part of the eviction project. Notably, the administration has imposed Section 144 in the area
to ensure that there is no untoward incident of violence. Additionally, a large troop of security forces have also been deployed in the area. Meanwhile, Kachar SP Ramandeep Kaur stated that clearance of tea estate is being done in line with the detailed MOU and no labourer will be at a loss. She further stated that the district commissioner will be holding a meeting likely by tomorrow as a confidence-building measure to address the grievances of the labourers. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कारणे दोनों टी एस्टेट और परा गवर्नमेंट ऑफ असम एक्वायर कोरी से लैंड हितु लैंड विराट माने डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोते एक्वायर कोरिबो कारणे गोइसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होत टी मैनेजमेंट टी वर्कर्स यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम रिप्रेजेंटेड बाय द डेप्टी कमिश्नर कचार हियोतोर मजोत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होइसे जो मेजर इश्यूज जी आसे about their employment, about the replantation हेतु टैकल हुई से so हेतु जी land acquire होबो corresponding replantation बेलेक एरिया होइप्लाई मानोबिला का अपना job continue करिबो पारिबो nobody will lose their job as per the current memorandum of understanding आरु हेतु लोए acquisition जेतिया होबो just confidence building measure करने कि आमी administration तार लोगोती आसे series of meetings होइसे एतिया लोके बिरात जी issues आइसे to address होइसे तथापि जितिया मानुहर किबा issue आसे next हेतु कारणे DC will conduct a meeting tomorrow probably and for confidence building measure the Kachar police has been doing flag marches in the area and hetu flag marches koriply ami tak hetu korisu ki ami we are there for them in case there is any issue which they should bring to the notice of the administration and they should not go for unnecessary protest because Barak Valley or Karne and the entire region Mizoram, Manipur and Imphal Karne this is a major development project which is coming and I'm sure it's a development project it's going to help everyone concerned in case someone has any issue so it should be brought forth to the administration so that no communication gap is there and the issues are addressed and we move forward for the development. And shifting focus now. In a moment of pride for Assam and the Northeast, mountaineer from Assam, Hidayat Ali, has successfully conquered the world's highest mountain peak, Mount Everest. Hidayat Ali, a native of Hajo in Kamrup district of central Assam and currently settled in California, USA, has successfully climbed Mount Everest this morning. Ali reached the summit of the highest peak in the world from Nepal around 7:30 a.m. He summited as a US national. Ali is part of an 11-member international expedition team comprising two other Indian mountaineers, Jatin Ramesh Chaudhary and Prakriti Varshni, that summited the peak today. An alumnus of Sainik School Gwalpara and an engineering graduate from Jorhat Engineering College in Eastern Assam, Hidayat Ali is a software engineer in Silicon Valley of the USA. He has also summited South America's highest peak, Mount Aconcagua, Europe's highest peak, Mount Elbrus, and Africa's highest peak, Mount Kilimanjaro, in the past. It may be mentioned here that Hidayat Ali is the 8th mountaineer from Assam to conquer Mount Everest. Earlier, Tarun Saikia, Manish Teka, Henry David Ingti, Khorsing Teron, Nabakumar Fukon, Nanda Dulal Das, and Kunchuk Tempa had also achieved the feat. And on to some other news now. Bollywood diva Kareena Kapoor Khan has begun shooting for her new film. The actress on Wednesday updated her fans that she is currently in West Bengal's Kalimpong shooting for her upcoming Netflix film with filmmaker Sujoy Ghosh. The Jab We Met actor took to Instagram and shared a photo from the set of the untitled film in West Bengal's Kalimpong district.
In the photo, the actress can be seen getting ready for her shoot, but it is the breathtaking view behind her that has left netizens mesmerized. With clouds hovering over the hills and the sun shining brightly above, it truly is a sight to behold. It may be mentioned that the breathtaking photo also drew reactions from Kareena's sister-in-law, Sabah Pataudi, as well as elder sister and Bollywood film star Karishma Kapoor. And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया. All the best. We, the people of the Northeast, can also contest. उस नाम के अंदर बहुत कुछ है. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल.